दोस्तों, बॉलीवुड की मूवी विक्रम वेदा को ट्विटर पर बाइकआउट किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ऋतिक रोशन का आमिर खान को सपोर्ट करना था। जब आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा का जोरदार और पुरजोर तरीके से बाइकआउट हो रहा था, तब ऋतिक रोशन ने ट्विटर पर आमिर खान की फिल्म की तारीफ की थी और उनका सपोर्ट किया था। फिर क्या था, लोगों ने ऋतिक रोशन की फिल्म का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर लोगों का कहना है कि ये फिल्म 2017 में ही तमिल में बन चुकी है और हिंदी डब भी हो चुकी है, तो फिर पुरानी कहानी को थिएटर में देखकर पैसे क्यों खर्च किया जाए। साथ ही साथ दूसरे यूजर ये भी लिखते हैं, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान वाली विक्रम वेदा तमिल वाली मूवी की एक एक चीज कॉपी की गई है। यूजर का कहना है कि एक भी सीन ओरिजिनल नहीं बनाया गया है, यहाँ तक के उनके कपड़े को भी कॉपी किया गया है, तो ऐसी मूवी को देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर एक्टिंग की बात की जाए, एक्टिंग देखकर लोग बौखला गए हैं। उनका कहना है कि ऋतिक का लुक दमदार है, लेकिन जैसे वो मुंह खोलते हैं उनकी सुपर 30 और कोई मिल गया की याद आ जाती है। लोग विजय सेतुपति की तारीफ कर रहे हैं कि जितनी शिद्दत से उन्होंने अपना किरदार निभाया है, ऋतिक उसका 1% भी नहीं कर पाए। एक यूजर का कहना है कि ये कॉपी के बिना और कुछ नहीं कर सकते। ट्रोलर्स में भी बॉलीवुड को लेकर पहले से गुस्सा भरा हुआ है। उनका आरोप है कि बॉलीवुड हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है। वो कुछ नया लेकर नहीं आते, या तो साउथ की कॉपी करते हैं या फिर हॉलीवुड की रीमेक बनाते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर PS1 को लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। लोगों का कहना है कि विक्रम वेदा की जगह आप PS1 को सपोर्ट करें, क्योंकि इसके अंदर आपको एक्शन और हिस्ट्री सब कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों, PS1 को लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। We know that we all go to the pyramids, we go see the Leaning Tower of Pisa. Someone said something very nicely. He said, we are actually appreciating a building that doesn't stand. It's falling over and wow, let's take a picture, let's take a selfie, and we're getting excited. But we have temples today that stand and they didn't use plaster. Do you know that for this particular stone, they had to use a ramp which was 6 kilometers long, which was pulled by bulls, elephants and people. 6 kilometers long to get it up there, without any machinery, without any cranes, without anything. And they didn't have plaster. It withstood 6 earthquakes. You know what happens when an earthquake comes? Without plaster. What they have done is they have an outer wall. Then inside that they have a corridor of 6 feet, which is an open, just a corridor. And then they have another structure inside which goes all the way to the top, which is why they can withstand earthquakes, which is why they stood so long. So these are all things that we need to know about. This particular king has built 5,000 dams in his time, and he's made a water management ministry in that time. He's had elections for the village leaders. He's asked them to name cities after women. Why should it only be men? Why can't it be named after a queen? And they've had hospitals, free hospitals, and and he actually brought loans. I mean, he used to give loans. He used to help people get dignity, not just throw money around. So this is something that's so illustrious. And this happened in the 9th century. I'm sorry, I'm taking so much time. It happened in the 9th century when the rest of the world, you talk about superpowers today, the 9th century all this happened when we had the biggest maritime naval thing in the world. And it went all the way to Bali, all the way to Malaysia, and went till we sent emissaries to China. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus till 500 years later. So think about our culture, think about how advanced we were. We need to be proud of this. It's nothing to do with North India, South India, West India, East India. It is, we are Indians, and we need to feel proud about that. And England is so illustrious, but England were invaded by the Vikings, and the Europe was in the dark ages during the 9th century. They had nothing going on. So don't you think we should celebrate history? Absolutely, absolutely. Thank you very much. Thank you. Manisha, I need water, please.